Namaste. It is a great pleasure to be here amongst you to discuss a basic framework or understanding about global market forces. We have heard a lot about these days about narratives or in Hindi Vimarsh, but many times we are not very clear about the ideological basis behind those Vimarsh or those narratives. As Ness believes in भारत के भारत को जानो और भारत को मानो उसके साथ भारत के बनो और भारत को बनाओ इन दैट बनाने की प्रक्रिया देर आर मेजर हर्डल्स ऑफ एंटी भारत फोर्सेस एंड ऑल दोस फोर्सेस have certain ideological routines. There is one force of cultural Marxism which has roots in the Marxist or communist ideology. There is uh, a framework of Islamic radicalism which has roots in Islamist theories. There is a force of Christian evangelism which has roots in the church related activities and its ideology. But there is fourth force which drives many of these activities at the global level, uh, many many times very subtle, and earlier it was broadly known as capitalism or global capitalism or neoliberalism or Americanism or American exceptionalism, but I would like to call it as a global marketism or global market force. Why global marketism? Because it essentially believes that world is one market. It has to be driven by same values, same structures, and it has to be monopolized by certain conglomerates who will drive certain value system to control the world. Now, it has not happened over the overnight. It's two things. Uh, One is uh, about George Soros and his network of open society. And another thing, terminology which is popularly used these days called liberal. Now, while talking about Soros, Soros is essentially a market manipulator. He earns out of the fluctuations in the market. But what is his interest in investing in regime change or toppling governments or investing in destabilizing democracies like India? And what is liberal in left? Left and liberal cannot go together. That's like left liberal. What is liberal in that? What is the ideological force behind it? What is their modus operandi? How do they impact the societies like Bharat? Mm, what is their ultimate game plan? These are the certain things which I would like to briefly present before you. Uh, so please, we need to understand that when European colonization started, there was a ideological process or churning that was going on within Europe. That was largely a battle between Catholic Church and Protestantism. If I'll while in this brief presentation, I'll mention about some few books, and whoever is interested, please try to grab them and have a basic idea about what I'm trying to tell. One, of course, is Vivek Ramaswamy, who was a Republican Party, one of the presidential candidates who has withdrawn now in the US.
he has written one wonderful book called Wokeism Inc. Why American multinational corporations or corporates fund wokeism. Uh, uh, so the basic idea that book gives is why capitalists fund left, how they promote left-leaning ideologies or Islamic fundamentalism in different parts of the world. Uh, but uh, as I said, this started in the ideology of Protestantism, or that began in Europe in 15th and 16th. Uh, if we go through the diary of Vasco da Gama, which is available online, the first voyage, uh, Vasco da Gama clearly writes, we popularly know Vasco da Gama किस लिए आया था, तो काली मिर्च की का व्यापार करने के लिए आया था. लेकिन Vasco da Gama in his diary clearly writes his two objectives. One, he came in search of a Christian king in Bharat called Prester John. This is the name he was looking for. And two, he wanted to inculcate certain kind of value system in India. Though it was essentially promoted by Catholic Church then, we need to understand what was going on in the background. In Europe, there was a battle going on between the church and certain individuals which later developed into Protestant movement. What was the basic parameters or fundamentals of this movement? The first prominent thing was individualism or individual rationalism. मानव और मानव की जो विवेक बुद्धि है, जो साइंटिफिक टेम्पर है, वो सर्वोच्च है. उसको पूरे पृथ्वी पर सारे जीव मात्रों पर उसको he has a power to control because of his rationality. So individualism and individual liberty is the cardinal principle. No collective entity has a right to interfere in individual's life. You have right only beyond my nose. What is uh, 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 within the borders of my nose? Nose is the border. You don't have a right to here. So individualism and individual liberty, scientificism or rationality, and on the basis of that, eventually one another facet evolved, which became the cardinal principle of governance called secularism, where the state has to be separated from church. The church will look after the religious affairs, while the state will look after the material or the secular affairs. So, this was the third important principle. And then the fourth thing that came in addition to this, what they started calling all these principles together as the modernity. Essentially, the supremacy of Western values over the entire world. And the entire feminist movement also came out of it because they were also fighting against the Catholic Church. So we need to understand this global market forces or Protestantism has emerged as a force essentially as anti-Catholic Church movement. Now, if we what was the impact? On the one hand, we have seen Galileo, Copernicus, all these scientists emerge and they started inventing various things, questioning the church dictum. On the other hand, there was a war between the Catholics and the Protestants, which is called as the 30-year war, 1618 to 1648. There was a war between the Catholics and the Protestants, killing more than 3 million people in Europe.
and which led to the ultimate decline on the of the Roman Empire, and the concepts of state sovereignty, mediation, diplomacy, what we call today, and the entire nation state system. The nation states based on religion on the one hand and language on the other emerged in Europe. So all these structures that we see on the basis of which they deny Bharat to be a Rashtra is basically what they mean is Bharat is not like European nation state, because for them language, ethnicity and religion has to be the basis of nation state, as happened in case of Germany. Germany was the epicenter of the then then France, then Britain. Uh, so uh, 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 there was another movement was added to it, that is called laissez-faire, that is the non-interference of state or collective authority or society in individuals' right to own property. Individualism or mercantilism was seen as a value. Wealth of Nations, the famous book by Adam Smith, became the foundation for this market economy. There is an invisible hand of market which will take care of everything. It will balance out everything. डिमांड और सप्लाई के रूल के आधार पर पूरा मार्केट चलेगा और वो अपने आप अपने स्टेबलाइज करेगा। इसलिए किसी को भी दूसरे के काम में या प्रॉपर्टी अर्न करने के राइट में इंटरफियर करने का अधिकार नहीं है, ना चर्च को ना स्टेट को। इसी से फिर और एक नया मूवमेंट शुरू हुआ वहां पे साइंटिफिसिज्म का, जो डार्विन से शुरू हुआ। उसने कहा कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज नॉट क्रिएशन ऑफ गॉड, इट इज नॉट द आउटकम ऑफ चर्च, but in his famous theory of laws of selection, nature's law of selection, he basically postulated human existence, or rather universal existence, as a consistent struggle. It is no coalition, it is no coalition, it is consistent struggle. Spencer took it to sociology and he gave a new concept in sociology called survival of the fittest. So Darwin gave it in biology, Spencer took it to sociology. So all modern disciplines that we call today are also outcome of this essential Protestant ideology based global market forces. Another outcome that happened in the field of political science, that is the theories propagated by Hobbes, Locke, Rousseau. So what is state? State or rather all human relationships are essentially contracts. So you are contractual, you are into contractual relationship, and therefore the role of the state is to supervise whether that contract is followed or not. If somebody is not following the contract, then you punish that person. Otherwise, state has a role only to leave everything to the market. Now, if this has to be studied in terms of institutions, then there was another theorist, German philosopher, who tried to give a framework for it for present day judiciary and bureaucracy, called Max Weber. He wrote a book which is again a very seminal text called The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism. He said capitalism has emerged out of Protestant ethics, and essentially it uh, the modernity that we see today in European terms, or European or Western modernity, that is essentially a gift of Protestantism. So that is why I said all the disciplines that we study today, whether in terms of, so they started seeing languages as fault lines, they started seeing religions as fault lines, they started seeing nation states and their borders as fault lines, and for them, market was the only universal thing.
So they have created grand narratives about Bharat. Now, why this is important? Because this became the basis of British colonialism also. Remember the difference between the Portuguese colonialism and British colonialism. Portuguese colonialism was essentially Catholic colonialism. The Catholic Church gave the word, charter to Vasco da Gama and Portuguese king to explore market and religion in Bharat. So their method was much more brutal. They were openly getting into conversion, while British was more Protestant. It was governed by the Protestant church. And that's why education, law, modern state became the instruments of colonization. So it was more a mental colonization. They are conversing with each other in English today. It's because of their sense of superiority on the basis of language. आप अलग अलग भाषाओं में बोल रहे हो तो आप पिछड़े हो और इसलिए आप एक देश एक राष्ट्र नहीं हो सकते या राष्ट्र राज्य नहीं हो सकते। ये इसेंशियल थियरी थी। तो इसलिए भारत को भी उन्होंने इसी पैरामीटर पर कि गुजराती बोलने वाला मराठी बोलने वाला या तमिल और पंजाबी बोलने वाला या असमी बोलने वाला ये मिलकर एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं। तो यूरोप जैसे अलग अलग राष्ट्र राज्य बने वैसे भी भारत बहुत सारे राष्ट्र राज्यों का समूह है। तो इसका परिणाम क्या? एक कुछ थियरीज गढ़ी भारत का अध्ययन करके, समय कम है इसलिए आई जस्ट ट्राई टू ब्रीफली प्रेजेंट अ फ्रेमवर्क हाउ इट्स इम्पैक्टेड भारत। वन, इट हैज क्रिएटेड अ सेंस ऑफ सब्जुगेशन। हम कहीं पे कम है, उन्होंने जो रेशियल सुपीरियरिटी की जो थियरी मार्केट इकोनॉमी के आधार पर डेवलप की, इसके आधार पर एक सेंस ऑफ सब्जुगेशन किया। दूसरा, एजुकेशन, लॉज, डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री, इसके आधार पर कॉलोनाइजेशन किया। जो वेस्टर्न मॉडर्निटी है वही केवल मॉडर्निटी है, इसके आधार पर उन्होंने, भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं था, भारत का कोई इतिहास नहीं है, भारत की कोई संस्कृति नहीं है, भारत में पहले से बहुत सारे आक्रमण होते रहे, आर्यों का हुआ, अरबों का हुआ, मंगोल्स का हुआ, अलग अलग यूरोपियन महासत्ताओं का हुआ, फिर ब्रिटिशों का हुआ। तो सभी लोग बाहर के हैं, मूल निवासी है वो कोई अलग है, अलग थे जो आज जनजाति के रूप में रहते हैं। ऐसी थियरी उन्होंने गढ़ने का प्रयास किया। फिर उसी के आधार पर उन्होंने द्रविडियन और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, बाकी सारे आउटसाइडर्स है, ये भी एक थियरी गढ़ी। आर्यन और नॉन आर्यन, ऑपरेसर एंड कॉलोनाइजर, ऑपरेस, ये बेसिकली हिंदूज आर ऑल्सो सक्सेसर्स ऑफ आर्यंस एंड दे वर ऑल्सो कॉलोनाइजर। ये थियरी उन्होंने अपनी सारे कॉलोनाइजेशन का बेस बनाया। फिर धर्म और रिलीजन को कोड टर्मिनस बना दिया। संस्कृत एक डेड लैंग्वेज है, संस्कृत कोई ज्ञान की भाषा नहीं थी, ये थियरी प्रोपोगेट की। अंग्रेजी को ज्ञान की भाषा के रूप में प्रस्तापित किया। देयर वाज नो कल्चर बिफोर अराइवल ऑफ ब्रिटिश, ये सेंस। देयर वाज नो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर वाज नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेसिकली भारत क्या था? तो भारत अलग अलग आपस में लड़ने वाले राजाओं का एक समुच्चय था, और दूसरा बेसिकली एक ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम में रिडन सोसाइटी थी, हु डिडंट हैव अ सेंस ऑफ नेशनहुड। ये बेसिक थियरी उन्होंने गढ़ने का काम किया, और इसके इसके परिणाम आज भी हम देख रहे हैं। ये चला लगभग ब्रिटिश जाने तक, लेकिन इस बीच में और एक डेवलपमेंट हुआ था, केवल और 2-3 मिनट लूंगा, कि अमेरिकन मॉडल एक डेवलप हो गया 1750 के बाद। विषय विषय बहुत बड़ा है, मैं और मतलब 4 सेशंस में भी इस पर बोल सकता हूँ, लेकिन आपको एक बेसिक इंक्विजिशन इसमें आए, इंटरेस्ट आए, इसलिए केवल फ्रेमवर्क रख रहा हूँ। अमेरिका का एक मॉडल, क्योंकि अमेरिकन मॉडल इसेंशियली चर्च का ही संदेश लेकर वो गया था, कोलंबस भी जैसे पोर्तुगीज भारत में आए थे,
उन्होंने वहां की सारी जो भी सभ्यता थी, रेड इंडियन जिनको उन्होंने कहा, उनको पूरा नष्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद वहां पे जो कल्चर इवॉल्व हुआ वो भी प्रोटेस्टेंटिज्म का था, और उसके आधार पर उन्होंने 1750 के बाद एक अमेरिकनिज्म का एक मॉडल डेवलप किया, इसेंशियली ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट अमेरिकन आइसोलेशनिज्म। अमेरिका एक अलग है, अमेरिका किसी के इसमें इंटरफियर नहीं करेगा, अमेरिका दूसरों को कॉलोनाइज नहीं करेगा, ऐसी। लेकिन साथ साथ अमेरिका एक इनोवेशन के लिए अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करेगा। तो पहला उनका इनोवेशन था ऑयल ऑयल एक्सप्लोरेशन। ऑयल एक्सप्लोरेशन के आधार पर पहली कंपनी बनी थी 1860s में। इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। इसका जो फाउंडर था या जिसने पहला इन्वेस्टमेंट इसमें बड़ा किया था, आपने शायद नाम सुना हो, नहीं तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए उनके बारे में, कॉल्ड रॉकफेलर फाउंडेशन। रॉकफेलर was the first person who started manipulating markets to create monopoly in the field of oil and gas। उसके पीछे पीछे आया उसका दोस्त फोर्ड। इसने एक एम्पायर खड़ा किया गाड़ियों का, और ये ऑयल बेचता था, ये गाड़ियां बेचता था। दोनों ने मिलकर अमेरिका में पहले ये सुनिश्चित किया कि वहां पे कोई रेल का नेटवर्क ना बने, ताकि सब लोगों को आइदर या हायर कार का मॉडल एम्प्लॉय करना पड़े। फिर इसके साथ साथ उन्होंने और एक मार्केट मैनिपुलेशन के जब उन पर आरोप लगने लगे और उन पर केसेस चले, 1904, 1905, 1906, तो 1908 के बाद रॉकफेलर ने अपनी कंपनी को अपने परिवार में डिवाइड कर दिया और उसका एक रॉकफेलर फाउंडेशन बनाया। इस फाउंडेशन ने मेडिकल एंड एग्रीकल्चर इन दो फील्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसी से इंटरनेशनल मेडिकल कमीशन बना, बाद में इसका डब्ल्यूएचओ बना। तो ये अमेरिकन मॉडल धीरे धीरे इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन का मॉडल बना, थ्रू मार्केट, थ्रू इन्वेस्टमेंट, थ्रू डिफेंस प्रोडक्ट्स के सेल्स, थ्रू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। एंड उसके साथ साथ फिर आगे जाकर उन्होंने एक सिस्टम और डेवलप किया 1920s के बाद, जिसको हम आज ब्रॉडली बैंकिंग एंड फाइनेंस, डॉलर सेंट्रिक इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ये उन्होंने धीरे धीरे डेवलप किया। 1980 के बाद इसी का और एक रूप हम देखते हैं, जहां पे टेक्नोलॉजी डेटा बिकेम द न्यू सोर्स ऑफ कॉलोनाइजेशन मैनिपुलेशन। तो बेसिकली जैसे इस्लाम ने पूरी पूरे वर्ल्ड को एक खलीफत खिलाफत में लाने का एक अंतिम ध्येय है, चर्च का जैसे पूरे वर्ल्ड को अंडर वन पोप और पेपसी में लाने का एक गोल है, या वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट के नाम पर कम्युनिज्म पूरे वर्ल्ड को एक कम्युनिज्म के मॉडल में लाना चाहता है, वैसे ही ये ग्लोबल मार्केट फोर्सेस कुछ कंपनियों के आधार पर, अभी कोई 126 कहता है, कोई 300 में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कहता है, बेसिकली दीज आर बिग कॉर्पोरेशन टू डिसाइड हु विल फाइट, कब तक वॉर चलेगा, कौन सा वॉर चलेगा, किसको क्या सप्लाई होगा। अभी हम यूक्रेन वॉर में भी ये देख सकते हैं, या ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली मार्केट को मैनिपुलेट करके डिमांड सप्लाई पूरे वर्ल्ड में क्रिएट करना और डॉलर की छपाई चलते रहना, ताकि पूरे वर्ल्ड पर अमेरिकन इंस्टीट्यूशन, अमेरिकन वैल्यूज, अमेरिकन मार्केट कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड को एक जैसा मार्केट बनाना, सब जगह एक जैसे मॉल दिखे, सब जगह फैमिली सिस्टम ब्रेकअप हो, सब जगह इंडिविजुअलिज्म एक्सट्रीम केस में जाए, सब जगह पर एक ही तरह का खान पान हो, सब जगह एक तरह का ड्रेसिंग हो। तो बेसिकली ग्लोबल एक मार्केट, और इसको गवर्न कौन करेगा, तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस करेगी, कभी आईएमएफ करेगा, कभी वर्ल्ड बैंक करेगा, कभी डब्ल्यूएचओ करेगा। अब उसमें उन्होंने एक नया आयाम और जोड़ दिया है। आप में से कुछ लोग ऐसी कंपनी से या कंसल्टेंसी से जुड़े हुए भी शायद होंगे, जो मैनिपुलेट करती है, पॉलिसी इंटरवेंशन करती है, केपीएमजी हो, डेलॉइट हो, अर्नेस्ट एंड यंग हो, बिग फोर जिनको कहा जाता है, या पीडब्ल्यूसी हो। So basically these are policy interventionist consultancies, but ultimately what do they do? Basically money power, military power, international
international organizations, NGOs and think tanks, global best practices या indices, hunger index, freedom, free speech index, media freedom index, ये जो सारे many of the controversies that we hear today, they are basically funded by these agencies. Universities, fellowships and exchange programs को promote करना so that they can plant their people like Kejriwal in the systems. Interventions at the government level through corrupt means, ब्यूरोक्रेट्स को या पॉलिटिशियंस को डिफेंस डील्स में बड़े कमीशन देना और उसके थ्रू गवर्नमेंट को कंट्रोल करना. दे ऑलवेज प्रीफर वीक गवर्नमेंट्स. दे ऑलवेज प्रीफर गवर्नमेंट्स whom they can manipulate और easily change. उनको स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कभी भी किसी भी जगह पर नहीं चाहिए. they use consultancy, they use media, they use academic intellectuals to manipulate these narratives. So these are their instruments, and we are seeing what kind of havoc they are creating. So many a times we do not understand their ideological might. I'll just give one brief example and then I'll stop. 2016-17 में एक मूवमेंट चला. मदर डेयरी दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही थी, कोऑपरेटिव बेस्ड, गवर्नमेंट फंडेड थी लेकिन कोऑपरेटिव बेस्ड एक मॉडल. सारे के बारे में एक रिपोर्ट छपी टाइम्स ऑफ इंडिया के एक कोने पर, छोटी सी रिपोर्ट छपी, हाउ दिस मिल्क प्रोडक्ट्स आर बैड फॉर हेल्थ. उसके बाद एक स्टोरी छपी just before Dashera Diwali season, that how these milk products have various contaminated elements in mother dairy products. मैं अभी अडानी का केस देखा, स्पेसिफिकली सोरोस ने टारगेट किया था, उस समय भी किसी ने टारगेट किया था, किसने किया था ये भी बताऊंगा. उसका हवाला दिया था. देयर वाज वन रिसर्च दैट वाज पब्लिश्ड बाय सम कंपनी, by some research think tank at the behest of European Union. यूरोपियन एक थिंक टैंक का रिपोर्ट था जिसके बेसिस पर ये कहा गया कि मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स में दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ और वहां पे मिल्क के प्रोडक्ट्स में मिलावट होती है. और ये सब चल रहा था और इसके बीच में ही सडनली 30-40% का मदर डेयरी का प्रोडक्शन, ये डिमांड जो है वो कोलैप्स कर गई, हिट कर गया पूरी तरह से मदर डेयरी को मार्केट. और केवल मदर डेयरी को नहीं किया, भारत में जो दशहरा दिवाली के समय जितनी मिठाइयों के प्रोडक्ट्स है उनकी सबकी डिमांड गिर गई. उसी बीच में कैडबरी ने अपने प्रोडक्ट्स की एक नई रेंज लॉन्च की और इसको अमिताभ बच्चन ने प्रमोट करना शुरू किया, कुछ मीठा हो जाए उसके साथ. पहली बार उस समय हमने ये देखा कि भारत के गांव गांव में भी बहनें कहने लगी रक्षाबंधन पर या बाद में भैया दूज पर कि भाई क्या लाएंगे तो कैडबरी लाएंगे. इंसिडेंटली द रिसर्च दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट एट द बिहेस्ट ऑफ वन think tank supported by European Commission, that report and that research was also funded by Cadbury. So Cadbury on the one hand give huge full page advertisements in media. They launch a full campaign with Amitabh Bachchan as a face, but to create that, they had already created a background through a research, a funded research, to discredit mother dairy and milk and products in India. So if you keep this in mind, then you will understand why and how the market forces behave. So this was a brief attempt to give you a basic framework and idea behind what is market forces, how they have evolved, what kind of impact they create in a society like India. Now, with these words, I thank the NEST team for inviting me to interact with you, and I would be more than glad to answer your queries. Thank you. Thank you. We are incredibly grateful to Sri Prafulla Ketkar ji for the time and effort that you have spent in delivering such a comprehensive yet effective session.
On behalf of Nest Bharat, I extend a heartfelt thank you for sharing his knowledge with us.